Good evening, everyone. On behalf of International Homeopathic Foundation, I welcome you all on this day, 3rd of Feb 2024. इतनी सर्दी पड़ रही है, हम सब नॉर्थ इंडिया में सर्दी से ठिठुर रहे हैं और इस टाइम पे हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर डॉक्टर जेडी दरयानी सर। डॉक्टर जेडी दरयानी सर को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं डॉक्टर जेडी दरयानी सर कौन हैं, बट बिकॉज ये एक रीत है, हमें ये फॉलो करना है, तो मैं आईएचएफ की तरफ से सर पहले तो आपको वेलकम करना चाहूंगी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जब मेरी डॉक्टर दरयानी सर से और डॉक्टर निशांत से बात हो रही थी तो थोड़ा सा सर एप्रीहेंसिव थे, क्योंकि उनको लगा कि वो वेबिनार कंडक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट हमारे लिए, हम सब होम्योपैथ्स के लिए सर ने एग्री किया और ये 2 दिन का शेड्यूल किया हमने सर के साथ, 3rd और 10th को। ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये सर की अपनी विल पावर, सर की अपनी इच्छा थी कि हाँ मैं अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। जो इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं डेफिनेटली उसमें से अगर कुछ सिखा पाऊँ तो मैं आईएचएफ के प्लेटफॉर्म पे जरूर आना चाहूंगा। सो सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला इस चीज के लिए। Before I move forward, those who are new to IHF, please let me introduce IHF to them. IHF was founded in the year 2015, which aims to promote homeopathy through academics and integrated approach. Since inception, we have organized various health camps, seminars, homeopathic medical education series. The most talked about 3 days successful International Homeopathic Congress was organized at Taj Vivanta Dwarka in April 2016, where more than 250 doctors, researchers participated globally. We had a mega panel discussion during COVID-19 जिसमें बहुत से speakers ने participate किया था। डॉक्टर दरयानी सर भी उनमें से एक हैं जिन्होंने participate किया था उस पूरी मेगा पैनल डिस्कशन में। तो डॉक्टर दरयानी सर हमें हमेशा गाइड करते हुए आए हैं, हमारे जितने भी वेबिनार्स हैं उसका पार्ट रहे हैं, किसी ना किसी तरह से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है आईएचएफ में। So IHF has also organized joint webinars with Lung Care Foundation to create awareness in society against increasing pollution and its harmful effects. Proposed credit system for homeopathic doctors to Ayush department, which is in process. IHF has started a learning campaign on social media, which is Let's Learn Together, and it has completed more than 200 days now. The management team of IHF consists of the senior mentors like Dr. R.N. Bahi sir, Dr. Muktinder Singh, myself, Dr. Amita Arora, Dr. Bhavna Malhotra, Dr. Monica Singh, Dr. Gurbir Kaur, Dr. Suman Sachdev, and Dr. Vinod Madan. So I welcome you, sir, on this platform on the topic common skin diseases in children and its homeopathic management. I request Dr. Bhavna Malhotra to give an official introduction of Dr. J.D. Daryani, sir. Over to you, Dr. Bhavna. डॉक्टर दरयानी का प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सर हम सबके लिए इतने आदरणीय हैं, उनका जो स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व है, हम सब उनमें एक मेंटर और फादर फिगर देखते हैं। एंड बहुत ज्यादा आज हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्रेस्टिजियस डे है कि हम सर को इतना सुन पाएंगे। So Dr. Daryani sir, he is a renowned homeopath having rich experience of 50 long years in clinical as well as in academics in the field of homeopathy. He has been former principal cum medical superintendent, professor and HOD repertory of Dr. MPK Homeo Medical College, Hospital and Research Center in Jaipur. He has been former dean, faculty of homeopathy, Rajasthan University and Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur. Former chairman, special Committee for Drug Proving, CCRH, Government of India. Former member, Advisory Committee, Ayush Homeopathy, Government of Rajasthan. Member, Academic Council, Homeopathic University, Jaipur. Conferred with various prestigious awards, including Dr. D.P. Rastogi Memorial Award in 2011 and 2017. Dr. B.K. Bose Memorial Best National Homeopathic Teachers Award in 2015.
Lifetime Achievement Award, 22nd All India Homeopathic Congress, Delhi, 16 December 2023 by All India Homeopathic Association of India, and before this by Board of Homeopathic System of Medicine, Delhi in 2009, AIMS Delhi. In 2014 and 9th National Homeopathic Conference 2023 in Agra. He has attended and presented scientific papers in several national and international conferences, including USA, Belgium, Dubai, France, Germany, Malaysia, Russia, Singapore, and many others. So I think हम सभी अपनी नोटबुक और पेंसिल पेन लेकर रेडी हैं सर कि आप हमें सिखाना शुरू करें और हम उसको सीखें. So most welcome to you, sir. डॉक्टर दरयानी सर, आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, आज हमारे यहाँ आपके इस वेबिनार पे कुछ स्पेशल गेस्ट भी हैं. सो डॉक्टर वीके गुप्ता, वीके चौहान सर, सॉरी, एंड डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर एमपी आर्या सर, डॉक्टर अनिल खुराना सर और डॉक्टर बख्शी भी ज्वाइन करने वाले थे, बट उनकी कुछ प्रायर कमिटमेंट्स आ गई, जिसकी वजह से दे वर टेलिंग मी के दे विल बी नॉट एबल टू ज्वाइन दिस वेबिनार. सो उनकी तरफ से भी आपको रिगार्ड सर, मैं उनका मैसेज कन्वे कर रही हूँ आपको. सो ओवर टू यू सर, द स्क्रीन इज ऑल योर्स. डॉक्टर निशांत, मैं शेयर अपना हटा रही हूँ यहाँ से, सो आई स्टॉप माय स्क्रीन शेयर. तो आप प्लीज अपना ऑन कर सकते हैं. ओवर टू यू डॉक्टर दरयानी सर. كل مرتاحين بس ما يبغوا ناس دكاتره، يبغوا الحين زي هذا ناو سليمان الحبيب प्लीज ناو आप सबसे ओपनिंग. रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अनम्यूट ना करें, because that will disturb the audience and the speaker as well. Yes, Dr. Nishant, we are able to view your screen. Thank you, Dr. Amita. Sure. First of all, I say thank you. Giving me an opportunity. I cannot forget Amita Arora, Dr. Amita Arora, because of what I can say, boost, energy को boost किया उन्होंने पीछे से. Buck up. Finally, आज मैं प्लेटफॉर्म पर हूँ. मैं एक बार पहले, सबसे पहले अमिता को, जिसको मैं अपनी बेटू कहता हूँ, बेटू, टॉम बॉय, बेटा नहीं, बेटी नहीं, बेटू, टॉम बॉय, फन बोला, बहुत एनर्जेटिक. थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटू. Well, I should not. If I am mistaken, I am sorry. First of all, I should have thanked to pay my gratitude to Dr. Vai sir, who has been always younger to me and most incredible person and motivated person. मैं हमेशा उनसे एक ही कहता हूँ कि मेरे से ज्यादा जवान आप लगते हो, और हमेशा मुस्कुराते रहना और बिल्कुल शांत स्वभाव से बात करना. सर, आपके चरणों में प्रणाम. डॉक्टर भाई सर, आपके चरणों में प्रणाम. चरणों में तो अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा. डॉक्टर मुक्तेंद्र सिंह इज अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, और मुझे बहुत ज्ञानी पुरुष न समझ में ध्यान आते हैं. बट
डॉक्टर भावना ने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं डॉक्टर भावना को भी थैंक यू बोलूंगा, और इस प्लेटफॉर्म के जितने भी मैनेजमेंट के बोर्ड हैं, इंक्लूडिंग जसबीर कौर जो कनाडा में है और वो सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ बैठ करके कमांड कर रही हैं। मैम तो क्या बोलूं, जसबीर, कुरबीर, not sorry, Jasbir, Kurbir, I am thankful to you also. But there are so many other officials, Dr. Monica Singh, कल ही तो बात हुई थी मोनिका सिंह से. Monica Singh is an official, and Dr. Suman Sachdeva. I think they are more than sufficient for me to pay them regards. Now I start with this. I should not forget डॉक्टर निशांत वॉइस की क्लियर नहीं आ रही थी. सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा. लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले गुरु को प्रणाम करूंगा. मेरे गुरु डॉक्टर ऋषि भार्गव सर, जो मेरे साथ 67 से जुड़े हुए हैं. मेरे को फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते और स्किन पढ़ा गए. एक दिन मेरे से कहने लगे कि दरियानी, तुम ये रूटीन केस देखते हो, इससे बेटर है कि तुम थोड़ा स्पेशलाइजेशन करो स्किन के अंदर. आई सेड सर, हमारे यहाँ कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता. तो उन्होंने कहा कि तुम खुद अपने आप को प्रिपेयर करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. और वो मेरे को इस लेवल पे ले आए कि मैं राजस्थान में इतना पॉपुलर हो गया और हफ्ते में once a week की बात twice a week आउटडोर चालू किया. एंड एवरीवन आई एम देयर. सर, अगर आप सामने देख रहे हैं तो मैं एक बार आपसे आशीर्वाद लूंगा. मैं आपसे आशीर्वाद ले रहा हूं. आशीर्वाद है आपको, करिए कार्यक्रम. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Well, first of all, Dr. Sir, my guru has told that first learn the normal skill and then after the abnormal. Now, what is normal? Start with the neonates. Now, I'm starting with the neonates. What is neonates? Complaints which are normal, where medicine is at all no role in. Self-limiting disease. That is the first slide here say. तो आप देख के हैरान हो रहे हैं कितना क्यूट बच्चा है, इसके चेहरे पे दाने से हो रहे हैं. दिस इज कॉल्ड मिलिया. मिलिया अलाई के जैसे दाने हैं. मिलिया, मिलिया. Well, most common skin complaint of neonates, very small, pearly, white, keratin-filled cyst, generally seen on the face of the newborns. Cause is unknown, but it is also considered that due to the dead skin, which doesn't follow, then this area is become thick and hard and turns into small cysts. Generally, it is painful. Next. But sheet of clothing which may irritate the skin and causes mild erythematous lesion or redness around the cyst, then it is called baby acne. Baby acne. Milia became a baby acne.
and may cause mild itching. Next, as such, there is no treatment is required, but it resolves in its own with few weeks. You know, एक माँ बाप को जो नए नए माँ बाप बने हुए हैं, नया नया बच्चा सामने आया, वो देख के बड़ा अपने आप में वो फील करते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो गया, डॉक्टर साहब इसको देखिए। हॉस्पिटल के अंदर जब डिलीवरी होती है तो सबसे पहले हॉस्पिटल का जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बट दे शुड को बताना चाहिए कि ये अक्सर बच्चों में हो जाता है और इस वजह से कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप उनके फैमिली फिजिशियन हैं तो वो आपसे भी जरूर कंसल्ट करते हैं। देन यू मस्ट टेल देम कि इट इज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, सो नथिंग इज टू बी वरीड। नेक्स्ट, वेल, बड़ा अच्छा नाम लग रहा है, एप्स्टीन पर्ल्स। Same. What is it is milia here? It is location wise. It is considered Epstein. What is the location? Yes. Next scene. Another skin condition of the neonate, same as milia. कुदरत ने एक ही चीज को दो अलग अलग नाम दे दिए। वजह एक सीन ऑन द रूफ ऑफ द माउथ एंड गम्स, और वो फेस पर है। हालांकि फेस का पार्ट है माउथ, बट इट इज आल्सो सेल्फ लिमिटिंग, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। कुछ लोग, आई मीन, इतने होम्योपैथ्स यहाँ बैठे हैं, I mean, my fellow colleagues or students, sometimes they must be considering why not borax. But I agree with you because your spot diagnosis could be, but you should not forget what is the origin. This origin is related with that one and it is considered to be the self-limiting diseases. So I think medicine should not be given or not to be given. Anyways, next. Well, now here is two different pictures of the same disease. One is Bailey and second is Epstein-Barr. Now you could differentiate itself, and that one is location is derma and second location is in the mouth. Same thing. But location is changed. Next. Well, this is really a panicky for the parents, or it's called erythema toxico. Yes. Well, erythema toxicum neonatum. Another common skin condition of the neonates, seen within 1 to 2 days after birth. Maybe immediate or one or 2 days after birth. They are small white papulopustules. Surrounded with irregular erythematous base anywhere on the body, but generally except non-hairy part, that is hands and feet or soles, palm or soles. Lesions disappears within few hours, but reoccur on another part. As I told you, the cause is unknown. Self-limiting is condition. No treatment is required.
And overall, in last, I sum up with this, it resolved itself completely because there was recurrence word was there. Recurrence was the condition. And here resolves completely within 1 or 2 weeks. What nature has gifted. कुछ दिया भी आंखों के सामने चुभन भी हो रही है और वो चुभन भी अपने आप खत्म हो रही है यानी नेचर हैज प्रोवाइडेड a defensive mechanism against the disease or against the abnormality, whatever it is called, and that is resolved. Yeah, next, please. Well, this is somewhat very horrible. Mongolian spots. That is birthmark. Now, this is a very typical, next, and unusual. It is congenital dermal mellocytosis. Congenital birthmarks. Commonly seen at the or soon after birth, generally seen in Asian and Black population. But it doesn't mean that India has not go. In India is also visible. Few cases are also visible because this is seen in Asian countries. India is in Asia. Our hospital, Surya Hospital, number of pediatricians, they know कि रोज केस आते हैं, 1-2 आते हैं, लेकिन हम उनको मना कर देते हैं. सिर्फ हाइजीनिक केयर रखनी है. They seems to be, their appearance is just like a generally seen gray, blue color pigmented spots of various size and shape. It is not fixed, but mainly it is found on the lumbosacral region and gluteal region. But again, mystery is there, their cause is not known, but it is sometimes believed that some hypothesis can be considered that, well, I will tell you later on, but this self-limiting, no treatment is required. Spots starts fading after the age of 1 year. Itself fading and rarely persists after 6 years age. This much of period, patient के पेरेंट्स कितने परेशान होते होंगे कि ये काला धब्बा कैसे जला जाए, ये बर्थ मार्क मिट सकता है कि नहीं. कुछ लोग उस समय लेजर के लिए एडवाइस करते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, आपके पास भी आएंगे, आप भी अकॉर्डिंग साइकोटिक पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, एक जगह कलेक्टिव है, सोरा साइकोटिक. कई बार आप लोग भी अपनी दवाई देना चालू करेंगे, बट एक अपने पेरेंट्स को सेटिस्फिकेशन के लिए और आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए दे सकते हैं. अगर मेरे पास आएगा ये पेशेंट, मैं डॉक्टर मुक्तेंद्र सिंह के यहाँ रेफर कर दूंगा क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट वही है, बच्चों की बीमारी के बारे में वही जानते हैं. मैं तो इतना नादान हूं कि मैं नहीं समझ पाऊंगा. Anyways, next, but I should mention that in my mind अगर स्ट्राइक होगा तो मैं पहले सल्फर दूंगा, सोरा या थूजा दूं. मैं पहले थूजा दूंगा. क्यों? Psychotic appearance is more prominent in comparison to sora. It has been come from sora to psychosis. So then sora is latent and psycho is upper side. The first one hit has to be given on this. But I never come across it except one case. Except one case, that is, I think it was
One was Gujarati family, and finally वो लोग बॉम्बे ले गए और वहां जाकर स्किन स्पेशलिस्ट या पेडिट्रिशियन से कंसल्ट करा के स्टार्ट करते थे. बट in hospital where I'm practicing, I'm having chamber, Surya Hospital, they pediatricians, they say कि हमारे पास तो आते हैं, हम लोग मना कर देते हैं, सेल्फ लिमिटिंग है. ज्यादा से ज्यादा कोकोनट ऑयल की जगह एलोवेरा क्रीम यूज करें, वो ज्यादा बेटर है. नेक्स्ट, दिस इज नेपकिन डर्मेटाइटिस. बहुत केसेस आते हैं एलर्जी के. This is also allergic background. देखते हैं हगी पहनाना एक शौक हो गया. अब मार्केट में जो कुछ भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसमें हर एक को कोई हगी, किसी को फगी, किसी को डगी. I mean with the different brand names. But what is actually it is? It is chemically coated. And person or individually, if he is sensitive to particular, that is chemical, which is there. But God itself has given a chemical, that is what? That is chemical occurs during ammonia salt in urine and chemical coating diaper. इतनी देर तक अमोनिया सॉल्ट वहां रहा. This inflammatory condition is found in diaper, occurs due to ammonia salt in urine and chemical coating of diaper. Most common medicine which I use is sulfur 6 dose only. I wait and ask them patient, after 1 week, I will review the case. But you should not forget, you must ask, rather we should ask the parental history. Definitely you will find the allergic background, respiratory or skin, whatever it may be. This will give you a short picture that ultimately to get rid of from this, tuberculinum has to be introduced, or rather should be given. Whatever it is there, but one constitutional remedy, that is something different. But as far as the allergic background is concerned, the final package, final to be logged with the tuberculinum as far the Burnett theory is concerned. Next, sir. Well, this is another picture of the same region, but it is candidiasis, fungal. Now see the fiery look. This is because of constant wetting. गीला रहने की वजह से फंगल हो गया. Now this fungus comes from heat and moisture, and that is in psychotic group. Now this appearance is somewhat, an earlier slide was, this was not so much, this is simply a demarcation. Here is the whole area is. Now, next, what it is? Was due to diaper use, but of fungal background. There it was an allergic background. Acute, angry looking eruption of the diaper area, with or without itching. This depends upon the presentation of case of individual. What you have learned
Since it is fungal or Candidian origin, the recurrence due to heat and moisture will occur. Next. Most common medicine which I use, CPR, constant waiting. बेशक गीला रहने पर. But we should not forget the Merxol also. I compare Merxol with this aggravation from heat, humidity, and moisture, and night aggravation. Well, similarly in sulfur. Sulfur I use where it is itchy, irresistible desire to itch. बच्चा खुजाता रहेगा. यहाँ बच्चा रात को खुजाएगा मर्क्सॉल के अंदर, तो सल्फर में भी रात को ही खुजाता है. लेकिन सल्फर और मर्क्सॉल के बीच की बात यह है कि वो दिन भर खुजाएगा सल्फर में और रात को भी खुजाएगा. यहाँ सिर्फ हीट, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर एंड नाइट तीनों चीजें हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ गीला होने पर कोई खुजली ज्यादा मार्क नहीं है. सो आई विल से it all depends upon the skill of the physician, homeopath, that according to presentation of case he can apply. Well, to check the recurrence, the constitutional remedy or intercurrent medicine. Dr. Muktinder sir, with your due respect, you may allow me that I use the basilinum because fungal recurrence checked by the basilinum and allergic background to be checked with tuberculinum. Thank you, sir. Next. Well, now here are two different pictures, but here said one is the background is allergic and second is candidiasis. Next, please. Candidal group. Well, seems to be very horrible, and not for us, but even for the parents also. This cut. A child is silent, not crying. Painless cut, especially in the folds, groin region, behind the ear, crease area, the neck. But my dear, you must learn something that if it is in the during dentitional period, it is most common thing. Painless. Only single medicine is causticum. Next, please. This is called medically terminology, which is we use intertigo, erythematous fissured lesion in the folds of skin, especially groin, axilla, neck, behind the ears. Well, as I told you, I have mentioned the causticum, it is a painless. Next, and especially during dentition period, it is the most common medicine. Now here, behind the ear, but little bit with difference. Now this is pyogenic infection, pyogenic bacterial. Why it is so? And it is not proper hygiene has taken place. You are maintained. It is a secondary, maybe place which is quite painful. Or streptococci or staphylococci can be considered the bacterial infection here. But again, it is the skill of the homeo friends that depends upon the presentation hip herself, purulent, as well as painful, sensitive to touch. Ashu,
बच्चा रोने लगेगा. But mud sore should not be forgotten, because night aggravation, if it is marked, again the same point of fungal, wet and humid and night aggravation. Nitric acid we can consider, or I consider, when it is bleeding, painful bleeding. And if it is oozing, this crust are there. Now see the tip of the lobe. Look at the lobe. There is a corner which appears to be the crest. Now these crest can be covered with graphitis or meserium, according to presentation. Now these crest, which I am looking at this slide, is of honey-colored discharge. Honey. Next, please. Well, this is a classical case which you will, I mean, come on, anybody else can tell what it is? ये भी मुझे अपने गुरु से दिखा के मेडिसिनल टर्मिनोलॉजी के अंदर डायग्नोसिस सीखा. पेशेंट तो इम्प्रूव कर गया. Later on he said it is interdigo. Daryani, it is interdigo with candidal background. Sir, how it is interdigo? पहले बच्चे को जो कुछ भी था उसको उसने रगड़ा है, मतलब खुजली चली है. आप देखिए कि बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर है, फोल्ड ऑफ द स्किन. ये पार्ट हमने खुला रखा है इसलिए थोड़ा दूर नजर आ रहा है, बटरफ्लाई के जैसे दिख रहा है. बट इट इज रेडनेस. क्यों हुई रेडनेस? बच्चा ने खुजाया, ईचिंग हुई, खुजाने से वो रेड होता गया और ये शेप सामने आया. अगर ये बंद रहता तो इतना पता नहीं लगता, लेकिन फोटोग्राफ जो तुमने ली है वहां पर अपने चेंबर में, उस हिसाब से ये चीज सामने. 6 महीने का बच्चा. आई थिंक इट इज देविकी शो, देविका खंडेलवाल. यस, हियर इट इज देविका खंडेलवाल. यस, देविका खंडेलवाल. My dear, that I want to share with you. Since it was looking with the marked margin erythematous and itching was there, without considering anything, I prescribed the sulfur 6 dose. After a week, there was a better relief. I mean, appearance was better, looking better, and gradually a time has come when again it seems to be appearing in the rash form, I mean, erythematous form, and ultimately, in spite of sulfur 30 at 6, I prescribed the sulfur 30, a single dose, and after 15 days, I said, now you come. Now the next, please. Well, this is the second follow-up, and here it is the final picture. मेरे को डायग्नोसिस करना नहीं आया. मैंने दवा तो दे दी और सर को बता भी दिया मैंने, वो तो इम्प्रूव कर गई सर, ये कंडीशन है, पर डायग्नोसिस क्या होगा? व्हाई नॉट ए फंगल? यार तुम सही हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको समझो तो सही तुम. ये इट इज सेकेंडेड बिकॉज ऑफ ईचिंग, कॉन्स्टेंट ईचिंग, रगड़ खाना, फ्रिक्शन. बट ओरिजिनली इट इज फंगल. Now, दिमाग की बत्ती
खुल गई। नेक्स्ट, ये बच्चे को जब माँ लाती है तो वो एक ही बात कहती है कि ये सारे बाल उतर जाएंगे। नाउ लुक एट दिस एरिया वेयर इट इज, आई मीन, this is a crusty, leathery, crusty. Here it is clear, front and side is very clear, but in last, the some patch which is looking crusty. What it is? The newborn babies persist for months together, though it is not non-contagious. But what is the cry of the parents? Gradually, that is when they remove the crust, बाल हाथ में आ जाते हैं, पूरे बाल उड़ जाते हैं. Now they are concerned for the कि बाल उतर जाएंगे तो फिर बच्चा क्या कहलाएगा? गंजा. इसको सब देखिए. Now being a medicos and being a homeopath, we don't believe in the terminology. We believe in the disease in the person. We consider the individuality. That is something different. But what is the disease picture? That we have to understand also. The disease is caused by excessive secretion of sebaceous glands. That is sebum, which is oily in nature. Oil thick होने, oil की layer बनती जाती है और thick होती जाती है. This thick lemon colored and yellow crust gradually spreading in nature. जितना पोर्शन ढकता जाएगा उतनी हाइपर सिक्रेशन गर्मी की वजह से ज्यादा होती जाएगी. And ultimately this is considered if itchy or not itchy. If removing the crust, hair comes out. Now this is the 2 points which we have to consider here. Now the person individual, what the parents has given and what you observe. Subjective symptom is something different than what the objective symptom is there. You observe that if it is non-lemon colored or it is simply a leathery color skin, and cicuta is the only drug of choice. But when it flare-ups, next, that condition is clinically resembles in favor of Staphylococcus aureus. But the hypothesis is behind this condition is related to use of heavy doses of antibiotics taken either by mother during pregnancy or by the infant soon after birth. तो क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि antibiotics kills the both harmful bacteria as well as the beneficial bacteria. And that prevents the growth of yeast. Is fungal. Next. So, clinically picture is in favor of cicuta, hard lemon colored crust without itching. And Staphylococcus aureus, moist, foul, eroding crust. We consider Maxol or Meserium and itchy worse at night. Both the medicines are itchy at worse at night. One is the whole night and Meserium is
again at night. But here with Merksol, there is a background of fungal that is moist and humid and heat. But, I mean, depends upon the presentation or skill of the patient. Whatever I am giving my experience, I'm sharing my experience. That doesn't mean it is hard and fast that we should prescribe accordingly. It is my experience. I'm sharing my experience to you. Well, next. This is birds. मोती मोती की क्या खूबसूरती होती है, राउंड तो होता है, ओवल होता है, बीच में एक डिच होती है. Is it this dome-shaped pearl-like papule or nodule? There is a difference between papule and nodule. Nodule is hard. May occur anywhere in the body except palm and sole. Now, what is the cause? Cause is viral. Like warts, they come in the same category, self-limiting. No treatment is required, but you know, अगर आप भी खुद का बच्चा हो तो आपसे इतना बर्दाश्त नहीं होगा. आपसे डॉक्टर हो गए, आप कहेंगे भले कि ये चीज ऐसी है, पर आपके बच्चे की माँ वो तो चिल्लाएगी, क्या डॉक्टर हो, क्या जानते हो, दवाई क्यों नहीं देते, ये खत्म क्यों नहीं होता. My dear friends, though in literature it has given the picture that I will come later on, but you see the second variety of the molluscum where it occurs, because anywhere in the body it can appear. But now, treatment part I will explain it later on. Now look at this corner of lips, lower lips, lower region. It is contagious. How the contagious? Contaminated objects, that is towel, clothing, toys, and at swimming pool, water. कोई जरूरी नहीं है कि छोटा बच्चा पानी में नहाता हो या स्विमिंग पूल पे जाता हो, बड़े ही जाते होंगे, पर कंटेजियस है. अगर किसी के है तो वो उसका दूसरे पे कांटेक्ट से फर्क पड़ गया, तो इट इज वायरल इन बैकग्राउंड. It is self-limiting. Next. Well, in literature, what it is given, according to that, initially I used to try chromium, calcareous sulf, silesia, and thuja as considered most common remedy. But I am sorry to say, Uptender Singh ji, आप मुझे माफ करेंगे, in my clinical practice didn't got much success, because I don't know whether I am capable to handle such cases or not, but I am sorry, it is self-limiting, viral, in fact a viral background resolves after completing its course. But in between, कई बार बच्चा खुजाता है ईची, और वो ईच की वजह से सेकेंडरी डेवलप हो गया कि इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए दवा जरूर देंगे. उसके लिए जो भी इंडिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, दवा देंगे. बाकी अगर नॉर्मल सामने आ रहा है केस तो मैं तो मना कर देता हूं कि मत लीजिए. लेकिन उसमें भी दो क्वालिटी है. पहला, हार्ट डिफरेंशिएट करना है. पूजा इज द जनरल मेडिसिन
because it comes in viral group on wart group. Calcarea, soft, sweaty, and bromium is again without sweats or other thing. But it is all at one hand, and second, Daryani, clinically in practice didn't found much success. Next. Well, what a beautiful eyes, eye-catching. I mean, very charming look, rosy cheeks. It is disease. It is atopy. Atopy means atopic dermatitis. In short form, it is known as atopy. Now it is also allergic background. Dermatitis, itis means inflammation. Please. Next. Now here is extensive atopic dermatitis. Local part and whole body basin. Next now cases. I will show the cases. First I will tell you the introduction about this allergic background, dry skin with paroxysmal itching, generally gets worse from change of weather or temperature. This is the first point of the allergic person or individual, sudden change of temperature or weather. It always gives an indication, sudden. It is in our mind, either pulse, phosphorus, bath salt, and if child is healthy with sweating, the calcarea fast can be considered. It is all depends upon the presentation of case and the skill of the physician. I'm not supposed to tell anything about this and to claim that this is the only remedy. No. But we should not forget that if atopic dermatitis patient is with us, we should always advise the patient, parents, that they should keep away from dust, keep away from synthetic clothes, woolens. Any strong smell means perfume or talcum. Any irritant like soap or shampoo or cream, they should avoid it. But now what they should apply? This depends upon the tolerance of the small individual. Now, जॉनसन का जो एड आता है, उस एड के अंदर यही है कि सॉफ्ट 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 नॉन इरिटेंट. So it is up to you. Now I leave with you all, and now going further with the case presentation. But if it is constant scratching and rubbing, may results into injury, soft tissue injury, which makes the skin raw, sore, and occasionally secondary infection may also produce. Well, in the same point, just highlighting, it is not, a formula from my side, but it is just being a teacher of Metra Medica and repertory, just I'm giving an idea, rough idea.
that what I prescribe during the acute stage, that acute stage nothing but fiery look, is erythematous as well as itching. It is sulfur, again sora, sensitiveness. Astox has got a good number of variety of skin rashes. Good number of various types of eruptions are covered by the. But the point is, erythema, rashes, itching, but pain, that is the main indication for Astox. While in case of Astox, it is pain because of soreness. And well, my dear friends, protein tick should not be forgotten. It is a broad spectrum for different types of rashes, as good as Astox. Sulfur is the king, no doubt. But the maximum range is in protein tick. Even scabies, herpes. Well, all other things are given here. And lastly, again, to check the recurrence, the constitutional medicine or intercurrent medicine tuberculinum is given. I follow, and to be given advice to you, because allergic background is there. Because of this allergic background, tuberculinum. And candidal background, it is the bacillinum. Next, please. Well, here is the, I think, is Himakshi. Well, she was brought to, was the age of hardly 1 year's age, and parents said, daughter, chamber this was chair. And then after follow-up number 1 and follow-up number 2. What was given to Himakshi was, I think, sulfur. Sulfur 6, yes. The case, yes, sulfur 6. He initially was sulfur 6. And later on, after completing, I got family history is also allergic background. But touch wood, she is quite young and now going to schools and doing all sort of activities, exposing in dust, playing everything. It is touch wood, without giving tuberculinum or etc. Sulfur has done his whole work. Now sulfur ki jai ho. Sulfur ki jai ho. Next. Well, I think this is Nunnu. It's Nunnu. Master Nunnu, son of doctor, 1 month age. और डॉक्टर साहब खुद कहे मैं एलोपैथी दवाई नहीं दूंगा, नहीं देने दूंगा. वाइफ में और मियां में बड़ा डिस्प्यूट हो गया. बच्चे की ये हालत है, आप अपने बच्चे को दवाई नहीं दे रहे. ले आए मेरे पास. अब बताइए कितना इनोसेंट है. लुक एट, क्या चीक्स का हाल हो रहा है. एरिथमेटस, ओहो, आंखें में स्वेलिंग आ रही है. देखिए आईलिड्स, एग्जामिनेशन टेबल पे लिया हुआ पिक्चर है. नेक्स्ट. Look at follow-ups. Oh, now this, right. And initially, now see the last.
बच्चा हाथ में लेते ही डर लगता था माँ को, लेकिन बाद में उसकी माँ अड़ोस पड़ोस के अंदर कहने लग गई कि हमारे डॉक्टर साहब ने तो मना कर दिया, दरियानी जी का इलाज कराया। दरियानी जी कौन? होम्योपैथी वाले, होम्योपैथी वाले। Now this is another case. I think it is Janvi Khandelwal. He was brought at 10 months age. Look, erythematous, look with swelling. His whole eye picture is almost swelled. This is front and this is the side view. And after removing the cloths, now table पे ही देखिए ये पिक्चर नजर आ रही है। ये इस साइड है बिठाया हुआ है, राइट एंड लेफ्ट दो पिक्चर साइड से लिए हुए हैं। टोटल इस बच्ची के 4 पिक्चर लिए गए फर्स्ट डे। वहां परेशान हो गई, और बच्चा मासूम कितना है, आंखें कितनी देखो चमकीली और अट्रैक्टिव लग रही है। और आज जब मेरे फोटो भी वीडियो पे देखती है तो यूं करती है, यू आई मीन शी फील्स प्लेजर बाय सीइंग मी। नेक्स्ट फॉलो। Now this was skin in the second follow to both sides, front and back. You feel any change? Let's come to the first. First, compare with the first. Now this is right and left. Come on, follow. Next. Golu. Golu. This is the present status of the Golu. Elkiria. Elkiria Guru. Well, this is the abdomen and this is the back. This is again in the clinic and the chamber. Mostly Dr. Nishant is seen on the background. He is receiving an award from Dr. Kulkarni for the best presentation of migraine case in somewhere in the Liga. Now, next. Oh, very horrible issue. This is in relation to the referee case. I think this is Khelwal family, someone. Vinay, what is it? Vidhan. After treating with the allopathies, but again recurrence is there. This is the one side and this is the another side of Vidhan. The age of 1. Next. Well, my dear, you just guess what could be the picture of medicine. Are they correct? Come on, sir, come on. Anybody else? Anybody else? No one. No one raise your hand. Okay. This is a pure, perfect look of Meserium. Meserium. Graphite is not so much fiery or bloody. Is always with the Meserium and night or the terrible period. Next, please. I Vidhan, first follow. One side, second side, this side, right and left, and center pose. Center pose. Next.
Oh, done now in different costumes, but camp is similar. Camp is similar. Here it is left side rashes on this side and right side rashes are still there. Isn't it? This one is the left side rashes are there and this, but I'll come on the first one. Now, look at this. First, oh yes, now see, what was the original picture? And now second follow, what was the picture? And now finally, yes, Golu, Golu. Next, oh yes, this is contagious. The name is tells me clear picture. बच्चा Dr. खुजाएगा, जहाँ भी Sorry, sir. मवाद लगती जाएगी, पानी लगता जाएगा. सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर निशांत, ये स्लाइड एक जगह होल्ड हो गई है. हाँ, अब आ गया इम्पेटिगो. ठीक है, थैंक यू. Impetigo. I said it is technology. बाबा टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे? वो भी तो बीच में रुक जाती है, थक जाती है. इट इज इजी दैट मैं यहाँ बैठा हूँ और आप वहां देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे आप लोग. सॉरी, सॉरी बाबा, सॉरी. नाउ दिस इज impetigo contagious. Now contagiosa. This side, left side, this look, and right side, this look. Anybody can compare which medicine is there? Yes. But no, because you people are. Net more. Hello. Next. It's a bacterial infection. Impetigo is always to be considered the bacterial infection because it is contagious. Commonly seen in face and infants of children. Contagious nature. Next. Well, initially it starts with the vesicles. Vesicle, like it is दाने से बनेंगे with erythematous surrounding. Vesicles changes into pustule. And finally, yellow, honey-colored crust are formed, and on removing the crust, there is sticky matter is seen with raw surface. वापस पहले वाली स्लाइड लाइए. वापस पिक्चर ये देखिए, honey-colored, yellow. This. Clinically, it resembles with Stephesagria. This I learned from Dr. Khanna Chauhan, V.K. Chauhan. If he is here, he must be feeling proud that I learned from him clinically that is in favor of cost cicuta. And here it is clinically in favor of Stephesagria. Yellow crest. On removing the crest, there is sticky matter, lemon yellow color. But some of my friends will not agree because this yellow, blue, and with crest can be the grape, and here it can be the mesothelium. But there is something different according to presentation and what you observe. That is something different, but clinically picture what I say. Clinically, it is in favor of. And this I learned from Dr. V.K. Chauhan. Next. Now, next. Clinically, picture is in favor of Stephesagria. Other common medicines are used, the cicuta, when it is dry.
Nephritis and meserium, when it is sticky discharge is there, but depending upon the presentation. Well, next please. Oh, now this was my small room where I started the practice with the blessing of my guru, Dr. Rishi Bhargav sir. Now you can understand what was my age at that time and how I look. And who is the person to whom I am showing it? He is Brigadier Maharaja Bhavani Singh of Jaipur. Bhavani Singh. He was under treatment of Dr. Jugal Kishore of Delhi. Now his whole family is still, I am attending. Brigadier Maharaja Bhavani Singh. But it was those days. Since those days, I am coming up, and now at this age became a Buddha Admi. Now I must give thanks to my Guru. Sir, अगर आप इस समय जग रहे हो और देख रहे हो तो मेरे को और आशीर्वाद दें कि मैं फलूं और मैं अमिता का बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे बाहर निकाला और आज मैं आपके सामने हूं. I became a little emotional. Thank you all. Thank you. It's okay. I'm a little bit emotional now. Thank you so much, sir. I think थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गए और आप अपनी पुरानी यादों में भी चले गए. हमें बहुत खुशी है इस चीज की सर कि आज आपके गुरु डॉक्टर ऋषि भार्गव सर भी यहाँ हैं और आपने जो कुछ इन स्लाइड्स में आपने मुझे याद है आपने कहा था कि मैं 45 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बट अगर मैं टाइम देखूं तो सर 1.5 आवर हो चुका है और आप कंटिन्यूसली बोल रहे थे. Oh my God. सो थैंक्स टू यू सर कि आपने इतनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रख के हम सबको ये सब सिखाया. मैं डॉक्टर ऋषि भार्गव सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो अभी सोए नहीं हैं और अभी आप कुछ 2 शब्द डॉक्टर दरयानी सर के लिए अगर कह सके तो. सो गए डॉक्टर ऋषि भार्गव सर. डॉक्टर इन लॉ भले बैठी हो. You hear बेटवा? बेटू? हाँ जी सर, आई कैन हियर यू. डॉक्टर ऋषि भार्गव सर का मेरे को आइकन भी दिख रहा है सर एंड मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भी दे दी है उनको, अगर वो सुन पा रहे हैं मुझे तो. मेरे ख्याल में सो गए होंगे वो अभी. ओके सर. जनरली एट दिस. ओके सर. एक बार अगर आइकन दिखाई दे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे और आशीर्वाद दें. उन्होंने बहुत मेरे को कोविड के बाद में घर से बाहर निकलने में और क्लिनिक अटेंड करने में बहुत मेरे को बाहर निकलो दरियानी, बाहर निकलो. यस सर. जब पेशेंट देखोगे तो अपने आप कमजोरी मिट जाएगी. और जब आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाएंगे सर तो आपकी कमजोरी मिट जाएगी. सही कह रही हो अमिता, बिल्कुल सही कह रही हो. मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मैं क्लास ले लूं तो मेरा सिर का दर्द गायब हो जाए. मेरी टॉनिक मेरी सेहत मेरा लेक्चर है और बोलना है. आई डोंट थैंक यू सो मच खाना सर. पीना सब भूल जाऊंगा. मुझे लेक्चर देना चालू हो जाए तो मैं कुछ मुझे मालूम नहीं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. और आपने इतनी अच्छी स्लाइड्स बनाई, एक एक पिक्चर के साथ हमें रेमेडीज जो बताई, तो दैट वाज वेरी यूजफुल. अभी बच्चों से चालू हुए हैं. बड़ों की बात में बताएंगे 10th को.
ओके सर। तो सर मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह सर से कि वो अपने रिमार्क्स दें प्लीज। गुरुदेव गुरुदेव। मुक्तिंदर सिंह सर, ओवर टू यू। ये कौन है? नाम क्या आ रहा है? डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सत श्री अकाल जी। सर जी सत श्री अकाल। डॉक्टर मुक्तिंदर सर, आप सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट हो चुके हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। नाराज हो गए वो। नहीं नहीं सर। नाराज हो गए वो। मैंने उनके एरिया में सर डॉक्टर ऋषि भार्गव सर हैं हमारे साथ। नहीं नहीं हम हाँ। ये रहे सर, उनका वीडियो भी आ सर रहा है। सर 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 आशीर्वाद दीजिए, कैसा रहा? सर कुछ बोलिए, एक दो लाइन भी बोलिए। दरियानी जी, बहुत अच्छा सर प्रोग्राम रहा आपका। बेसिक प्रोग्राम है और एक्चुअली मेरे को याद आ गई सन 68-69 की, जब मैं क्लास लिया करता था। हमारे 3rd ईयर 4th ईयर MBBS की जिनकी पोस्टिंग हमारे यहाँ होती थी, और उनको मैं इसी तरह से उस वक्त भी स्लाइड से पढ़ाया करता था। एक एक स्लाइड दिखा के और बच्चों को सिखाता था कि ऐसे देखो इसको और इस तरह से आगे बढ़ो। और इसके जो है वो बिल्कुल मैथमेटिक्स है, 2+2 + 2 = 4। अगर बीच में गड़बड़ कर दी तो आप कभी उसको डायग्नोसिस नहीं ले पाओगे, और डायग्नोसिस नहीं होगा तो ठीक भी नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मेरे को बुलाया आपने, मैंने बात की। hey sir, it's all because of you. Today what I am, what I have given, this is I am sharing with my students. नहीं, बहुत अच्छा है। Thank you sir, thank you very much sir. I'm honored. Okay. I'm honored sir. थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर ऋषि भार्गव सर, आपने अब टाइम निकाला, हम सबको आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डॉक्टर मुक्तिंदर सर के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी, ही हैज जॉइंड अगेन। हाँ जी सर। मैं ऑडिबल हूँ अमिता? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी, प्रणाम सर, डॉक्टर दरियानी सर, और आप हमारे गुरुजी और गुरुजी के गुरुजी को भी प्रणाम। तो सबसे पहले तो मैं IHF की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्टी थैंक्स और रिगार्ड्स पेश करूंगा कि आपने अपनी हेल्थ को, जैसे आपने एंड में बोला कि एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स और लेक्चर ही उसका टॉनिक होते हैं, तो वेरी राइटली सेड सर कि जब आपको देने में खुशी मिलती है ना, वो एक परोपकार से बड़ी चीज है। और सर जहां तक मैं सोचता हूँ कि मेरा जो कद बहुत छोटा है कि मैं आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ कमेंट कर सकूं, बट स्टिल क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी है, इसलिए जो आपने केसेस दिखाए हैं, और सबसे बढ़िया बात जो मेरे को लगी है कि बहुत सारी डिजीजेस जो हमारी होती हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। तो वी शुड just respect the course of disease until unless उसका जो सोरिक स्टेट अगर हम बिना दवाई के निकाल लें तो वो बहुत अच्छा रहता है, जब तक कि उसमें कुछ एड ऑन कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है, जब तक कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली इफेक्ट करके कोई पैथोलॉजिकल स्टेट में नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी टीचिंग है, बिकॉज डॉक्टर हैनेमन ने जो लेटेंट सोरा के बारे में लिखा है कि अपरेंटली हेल्दी स्टेट जो होती है ना, अपरेंटली हेल्दी स्टेट जो होती है उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, और उसको जो भी पेशेंट का होम्योस्टेसिस या वाइटल फोर्स की अमिता, ये म्यूट करना जो पेशेंट्स क्रिएट कर रहे हैं उनको। कर दिया सर, कर दिया। हाँ जी, तो सॉरी।
जो वी शुड रिस्पेक्ट द कोर्स ऑफ डिजीज अनटिल अनलेस वो कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली और मॉर्बिडली इफेक्ट नहीं कर रही है, वी शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग। अब ये इतना गोल्डन लॉ है, और ये केवल और केवल जो एक सीजन्ड होम्योपैथ है जिसने अपनी जिंदगी में होम्योपैथी को कोर से अंडरस्टैंड किया है, वही ये स्टेटमेंट दे सकता है। नहीं तो आजकल तो मैंने देखा है कि लोग 1 साल के बच्चे को एन्यूरेसिस की दवाई दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल, हमारे पास कोई पेशेंट आया तो उसको दवाई देनी ही एक रास्ता है नहीं। डिजीज की मैनेजमेंट और डिजीज को अंडरस्टैंड करना और उसके कोर्स को अंडरस्टैंड करना, ये एक सीजन्ड फिजिशियन, बिकॉज मेरे को याद है कि डॉक्टर विजयकर जब करते थे उन्होंने एक स्लाइड दिखाई थी कि वन हु प्रिस्क्राइब्स द लीस्ट इज द बेस्ट होम्योपैथ। और सर का जो अप्रोच है, जैसे उन्होंने चीजों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थेरेपेटिक पे प्रैक्टिस करते हैं वो करते हैं ये नहीं तो तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, एक दवाई दो, नहीं हुआ 2 दे दो, 3 मिक्स करके दे दो, 4 मिक्स करके दे दो। बट सर ने अगर ये लॉजिकली दिखाया कि ये मेसेरियम है तो है, स्टेफिसिकेरिया है तो है, तो दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, जो कि केवल एक सदा हुआ साधक और एक अच्छा होम्योपैथी हमें दे सकता है। सर, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर योर प्रेजेंटेशन। और मेरे को खुद को एम्बेरस फील हो रहा था कि आप प्रेजेंटेशन के बीच में मेरे को बार बार रेफर कर रहे थे। मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ, तो आपसे सीखता हूँ, हमेशा सीखता हूँ। ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें वो रिगार्ड देते हैं और हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। So once again on this platform, on behalf of IHF, I heartily welcome you, regard you, and आपको मैं प्रणाम करता हूं, और हम आपके दूसरे सेशन की बहुत eagerly वेट करेंगे। Thank you. Thank you so much, sir. थैंक यू डॉक्टर दरयानी सर वंस अगेन। और 10th का हम सबको अगेन इंतजार रहेगा। आप इसी जोश से, इसी पेशेंस से और इसी विल से हमारे साथ बैठे रहेंगे, हम भी आपके साथ बैठे रहेंगे। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। डॉक्टर निशांत अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हम बोल पाएंगे? हाँ जी, अब सुनाई दे रहा सर। हाँ जी, बताइए। नहीं, ये बराबर में मैडम बैठी ऐसे ठीक कमल सा अभी हंस रही हैं, अभी हंस रही हैं। बोलिए मैम, थोड़ा बोलिए तो सही, इतनी देर से हंस रही हैं आप, कोई सर गलती हो गई? अब आई है आपके पास। हाँ, हाँ जी। इतनी देर से मुस्कुरा रही हैं, देख रही हैं, कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं सर, कोई गलती नहीं हुई। मैं वेट कर रही थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अनम्यूट नहीं हुआ था। अरे बाबा, अब मैं तो डरता हूँ मैम से, बिकॉज ये हमारे एडवाइजर रही हैं, चेयरमैन रही हैं। शैलजा मैम की बात कर रहे हैं सर। क्या सर? शैलजा मैम की बात कर रहे हैं शायद सर। डॉक्टर शैलजा? नहीं नहीं, ये बीच में जो कमल सेठी है शायद, सेठी है। मैं चेक करती हूँ सर। ये क्या है? गुरवीर, ओ माय गॉड, गुरवीर, गुरवीर, ओए तुसी की कर, ओए बेटा, ओए हूं तुसी ने पहचाने। तो मैं देखा है तो तो मैंने देखती है तो कोई मैं गलती कर जाएगा। आपकी बात है। ओए 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 ओए, सदके जावा बचरा, सदके जावा। ओए तू कनाडा विच बैठ के यार मनु देख रही है, मैं तनु देख रहा, ये सारा तेल तेरा खेला हुआ सी, सारा खेल तेरा खेला हुआ सी। ओए गुरवीर, जय हो जय हो जय हो। ओए इतनी मुस्कुराहट अच्छी लग रही थी, मैंने कहा ये गल की है, कोई मैं गलती करना है या मेरी भी कोई स्किन में कोई डिजीज हो गई है। ओए सदके जावा बेटा, सदके जावा पुत्र, सदके जावा।
Thank you, sir. जय हो। Thank you. Thank you. So, Okay, sir, अब thank you. परमिशन दीजिए कि हम ये मीटिंग क्लोज कर सकें अरे मैं और कौन 10th होता को हूँ, मैं फिर कौन से होता आपसे हूँ? मिल सकें। गुरवीर से परमिशन लो, बंद कर देगी, बंद कर देगी, सबकी लाइट बंद, बत्ती बंद, बत्ती बुझ गई। सर आपका मेरे इतना को अच्छा आपने मेरे को बचपन में याद दिला दिया। बहुत बैकड्रॉप में चला गया मैं, बहुत बैकड्रॉप में चला गया। थैंक यू टू माय फ्रेंड, माय निशांत, ही इज माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर निशांत जिन्होंने बिकॉज अपना ही टाइम प्रिपेयर्ड निकाला। दिस लाइफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, आप ही तो इसको कहती थी। थैंक्स टू यू डॉक्टर अमिता। नहीं नहीं डॉक्टर निशांत, आप दोनों ने इतना टाइम निकाला और हम लोगों को सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब 10th का हमें और इंतजार रहेगा कि सर हमें क्या और सिखाएंगे। मुंडे करना कनाडा बुला ले सी। सर आज आप अरे मैं क्या करांगा, बुढ़ापा मेरा, मैं की करेगा। जवान लड़का ना बुला दे कनाडा तो। श्योर श्योर ओए मेरी पुत्रा, तूने कमाल कर दी था। अब बत्ती बंद करो, बत्ती बंद चलिए सर, करो। चलिए सर, थैंक यू so much on behalf of International Homeopathic Foundation. I thank you once again. We will be waiting for 10th of Feb again at 8:30 p.m. We will be sharing the link to all the registered delegates again on 10th of Feb. और just a reminder कि IHF in collaboration with Baxen Homeopathic Medical College 21st of April को हैनीमैन डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वहीं पे बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में वीजी ऑडिटोरियम में। एंड वी हैव इनवाइटेड स्पेशल स्पीकर्स डॉक्टर परिनाज मैम, डॉक्टर परिनाज हुमरानवाला, डॉक्टर हर्ष निगम, डॉक्टर तान्या बख्शी. We have a gastroenterologist with us, Dr. Ridhima, and we all are eager and we will wait for all of you to join this in a physical meet. It will not be online, it will be a physical meet at Baxen Homeopathic Medical College on 21st April. So we will be sharing with you all the registration details and we look forward that maximum people should join this physical meet. Thank you once again everyone for your time and patience. Thank you Dr. Daryani sir, and we will be meeting again on 10th of Feb at 8:30 p.m. Thank you everyone. Thank you. Thank you.